like with the amount of money you paid on your ticket, you would have got a membership for the entire year. I think it's hundred some dollars. How much would they charge you for the ticket? 18 and 25. It's hundred some dollars for couple. Oh, it's not that for the year, for the entire year. All right. So you guys are able to see my screen? People have bought that the couple ticket and they Yes, sir. paid. Just a quick question. Is the background, which is the watermark that you see on the slides, is it too much? Do you want me to remove it? You guys able to see everything? Go through a couple of slides. पहले 70-80 डॉलर्स था हम लोग बहुत अच्छा लेते थे membership फिर अभी बंद कर देता चला नहीं Let me do one thing. Maybe I'll just change it. Just edit the thing for now. I will at that time it was like remove the thing, $70 which is somewhere like now. the amount you paid you can pay Arrange slides, change theme. $100 I'll use a simple theme I for think now. I went there it could be Alright, $100 that's fine. when you get to see it We'll start in a minute. so you could have gone numerous If you have your laptop open, it's good. If you don't, uh, make sure you're concentrating. urban है urban है तो where did that other pay That's the things we need. We need this. We need a Kaggle account. Okay, this looks good. This looks good. All right, so let's get started. So welcome to today's session. This is session number 4 for Python and Data Science plus Open. Today we are going to have our first session on Python, and we'll start with what is Python and why is it important, and especially why is it important for data science. We'll also start the code. I'll be explaining some operators. I'll be explaining some arithmetic operations in Python. So think of it like refresher if you already know Python, or an introduction if you have never heard of Python. All right. So just to discuss a few reasons why should we be learning coding or programming in the first place. Right. So here are a couple of reasons that I have shortlisted, and what are my reasons to learn a coding, or what are my reasons to teach programming, or what should be one of the reasons for you to learn programming. Okay, so here are main 6 reasons that are listed. I would like to understand from you all. You all can just go to the chat and write your reason. If your reason is not listed here, just make sure you add some reason. Now, this is the reason that you have to remember throughout the course, so that you stick to the course and stick to the commitment that you are going to learn Python. Right. So just to highlight a few that are written here. Firstly, attractive salaries, which I guess is one of the main reasons for most of the people who are joining the course. Second is it's a highly valuable skill to add to your resume, especially if you are in the job market right now. It is a skill which is not easy to gain, but has a really high return of investment. All right. By learning programming, you'll be getting multiple job offers. You'll be having multiple opportunities to interview. So you'll be in a pool of people who are having the skills which are limited, but the options to apply for are more than what you have, more than the pool basically. Next is the work from home. I work most of the times on from home. I don't have to go to the office. In fact, my office is too far from where I live, so I'll be always working from home most of the times. Once or twice I have to go to office. Uh, then there's a flexible hour thing, which means you don't have to start working at 9 and end at 6. The works are usually flexible, especially the times when you have a lot of work. You may have to work more than the 40 hours per week, but sometimes you may also be working maybe 10-20 hours a week, and that's fine too. The one that I like, or the reason which is most close to my heart, is express your creativity. So coding is something which lets you create
and it also gives you an opportunity to be creative and think think of it like building something. Okay, and even if you'll see many programs or the software that are written, those are just ideas, but converting those ideas into reality is what brings most value, right? So you can have any number of ideas, but once you convert that idea into something reality, that's when the value is generated for that idea. All right, so let me just go and check the chat window. I'd like to know your reasons. Why do you want to learn coding? All right, so I'll go back here. I'll check the chat window now. So you can just go to the chat. Maybe um, this is my reason. What about you all? Just type in your reason. I just want to get some idea about why exactly should you be learning coding. We have already discussed the reasons, especially for the Python and all. But still, if there are anything that you think are not listed here, you can go to the chat window here and type in the reason. On phone, it might be uh, at the bottom of the screen, the chat option, right? So growing career and good salary. Good, Harish. What about others? Aditya, Akshay, Amit, Ishan, Pramod. You can alternatively unmute yourself and maybe speak into the mic. That works too. Problem solving skill. Good. It helps you solve the problems too. Yeah. What about others? Akshay, Monica, Niharika, Ruchir, Shubhada, Shweta, Sunil, Yogita, right? Demand. Yes, it's a skill which is in high demand nowadays. In fact, you'll see programming being taught in schools, right? So maybe from 10th and 9th standard also people are starting to learn code. So it's a high demand skill, and you'll see a lot of people coming into this market in recent future. Just like math is an important skill, just like science is an important skill, coding is also going to be an important skill, and they'll be starting to teach this in schools. All right, what about others? Shweta, come on, guys, speak up. It's early morning. Good morning to everyone. Good morning, sir. Yes, Harish. शुभदा रुचिर क्या हुआ सब लोग कहाँ चले गए आज your reason could be one of these or it could be something else. Okay, not necessarily कि आपको बहुत ज़्यादा creative बनना है. You need to have a reason to start to learn something. Correct. That's what I'm trying to understand. What is your reason? If you're not thought of the reason, that make sure that you take today and think about what exactly is the reason, and keep that reason in mind and proceed with the course, because that is the reason that will get you through the course successfully. All right. Anyways, let's not be stuck there. Let's move on to the next. So here are some statistics about the Python and the salaries. Uh, on the x-axis, you'll see the years of experience, and on the y-axis, you will see the average salary that you can expect. So based on what level of experience you have right now, or what level of experience you're going to show on your resume, this is what you can expect. This is the average pay. So this is 10 lakhs, this is 9.10, this is 5.3 lakhs, this is 4.2 lakhs, right? So this is about this Python. If you're getting into pure Python coding, software engineering job, in addition to Python, if you also learn data science, this is what the statistic for data scientist looks like, right? So you see a difference, especially if there's someone who is having more than 5 or 7 years of experience. You'll see a increase in salary pretty drastically, right? And these are the people who know Python, who know data science, who know a little bit of machine learning, as well as who also know uh,
who also have good communication skills, right? We already talked about this, I think, in the previous sessions, so we'll not be spending a lot of time here. Here's the source of this. I'm not making up the numbers. Uh, you are all welcome to go and check the sources again, right? I'll be sharing this slides too. About the course, uh, we are going to have a textbook for this course. The first textbook that is written here is Think Python. So I'll just click here and show you what exactly that is. You click here, it will take you to the slide, and here you have a couple of options. You can download a PDF copy or you can read the copy here, right? So this is the textbook for our course. I'll be telling you that go ahead and read chapter number 1, chapter number 2, or chapter number 3, and so on, based on whatever things that we are going to discuss in the upcoming session. All right. So because today is the first session, I didn't have any reading exercise for you all, but soon we'll be starting to send the things that you need to read before the session. ठीक है? तो ये आपका टेक्स्ट बुक रहेगा. इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा. एक और टेक्स्ट बुक है, दिस टेक्स यू टू अ गिटहब रिपोजिटरी. गिटहब वगैरह सब हम लोग सीखेंगे, इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सॉरी यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हैं जो आपको टॉपिक वाइज लेके जाते हैं टू अ पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट विल गो वन बाय वन. ठीक है, डोंट वरी अबाउट बहुत सारे चीजें कैसे हो पाएगा. I'll make sure you understand each and everything and we'll get through it. स्टार्ट आउट विथ, हम लोग पाइथन के इंस्टॉलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा. फॉर फर्स्ट फ्यू सेशंस और मे बी फर्स्ट फ्यू वीक्स वी आर गोइंग टू यूज पाइथन बट इन अ ब्राउजर. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू ऑल टू इंस्टॉल एनीथिंग. इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है एंड बहुत सारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है इंस्टॉल करने में. तो आई थिंक बेटर आइडिया इज कि इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे हम लोग, कुछ भी जो भी करेंगे हम ब्राउजर में करेंगे एंड दैट शुड बी इनफ टू गेट अस स्टार्टेड. एक बार आप लोग पाइथन सीख जाओगे एट अ सर्टेन लेवल, उसके बाद में हम लोग इंस्टॉलेशन की बात करेंगे. बट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इंस्टॉलेशन में या फिर सिस्टम एरर्स वगैरह सॉल्व करने में नहीं जाएंगे. इट इज जस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड उसमें बहुत बार एफर्ट्स इतने लगते हैं कि वी फील लाइक नहीं होने वाला है, जस्ट गिव अप. सो वी डोंट वांट टू डू दैट. ऑलराइट, इवन इन स्कूल्स यू विल सी दैट तो कॉलेज में पहले इंस्टॉलेशन में इतना ज़्यादा बता रहे हैं, इंस्टॉल ये करो वो करो, फिर उसके बाद में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये सब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फाइनली स्टूडेंट एक्चुअली गिव अप. उनको लगता है कि ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी एंड दे जस्ट गिव अप. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. वी आर गोइंग टू यूज पाइथन एंड वी आर गोइंग टू यूज पाइथन इन अ ब्राउजर इन इंटरएक्टिव मोड. इंटरएक्टिव मोड मतलब आप कुछ टाइप करोगे उसका हमको आंसर तब के तब इंटरएक्टिवली मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज इंटरएक्टिव मोड. फाइल्स जब मैं आपको बोलूंगा कि एक असाइनमेंट दी जाएगी और अब अगर आपको असाइनमेंट जब सबमिट करना होता है तब वो असाइनमेंट में फाइल्स इधर से उधर पास करना ये सब कुछ भी नहीं होगा. यू हैव टू शेयर मी अ लिंक और वो लिंक पे आपका सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा. आई नो हाउ टू शेयर दैट, आई नो हाउ टू सेट दैट अप एंड ऑल. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी के सेशन में, आज के सेशन में. एक बार आप जब पाइथन सीख लेते हो, आफ्टर फ्यू वीक्स वी हैव टू इंस्टॉल PyCharm Community Edition. Okay, and the Python version that we use is Python 3.0. Python 3 के आगे के वर्जन हमें यूज करने हैं. डाउट सॉल्विंग के लिए कोई सेशन जब जरूरत पड़ेगी तब मैं कंडक्ट करूंगा, और अगर आपको क्वेरीज इमीडिएट क्वेरीज रहेंगी तो आप वो डिस्कॉर्ड चैनल पे शेयर कर सकते हो. इसका लिंक मैं सेंड करूंगा. आई थिंक once we have the people who are going to be admitted, उनके साथ में मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ, and then I can let them into the Discord server, and Discord server and everything is set up already. Just to give you a sneak peek into it, maybe I can share you the Discord channel once, show you what it looks like. Find your channel. So this is what your Discord server looks like. यहाँ पर we have different resources, data science, Python, Tableau, SQL. This is assignments. यहाँ पर assignments आपके पोस्ट की जाएगी. यहाँ पर आपको assignments सबमिट करने हैं. This is ask और answer. यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हो. अनाउंसमेंट कोई भी रहेंगे वो सारे अनाउंसमेंट यहाँ आ जाएंगे, स्पेशली कोर सेशन के जो अनाउंसमेंट होते हैं लिंक वगैरह वो सब यहाँ जाएगा.
फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, माइनर, मेजर, डेटा विजुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट, एंड दीज आर द प्रोजेक्ट ग्रुप दैट विल डू फॉर द मेजर प्रोजेक्ट। तो ये अभी तो काम भी नहीं आएंगे आपके, बट लेटर ऑन, शुरुआत में आपको सिर्फ ये 2-3 लिंक्स ही यूज पे रहने वाले, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक द एडमिशन फर्स्ट, एंड उसके बाद में आई लेट यू इन इनटू दिस सर्वर। आई ऑलरेडी हैव अ फ्यू पीपल हियर, teaching assistant, and couple of other people are going to help me. Admins are also going to be on this channel or server. All right. So nothing to worry. This is very easy interface. You just have to use it a couple of times. If you guys are using Instagram and Facebook, then this is nothing compared to that. This is simpler than that. All right. Okay. All right. Moving on. So that's about the course management. How you're going to manage the course. So I think this is not what we're going to do. All right, so let's start with differences between a programming language and a natural language. So natural language is something that we use to communicate amongst ourselves. English is a natural language. Hindi is a natural language, right? So जिसको हम लोग बोली भाषा बोलते हैं, right? So that is a natural language. And programming language is used to communicate with the computers. अगर हमें कुछ काम करना है और वो काम हमें ऑटोमेट करना है, कंप्यूटर को बताना है कि आपको ये काम करना है, तो हमें वो कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करनी होती है, जैसे कि पाइथन, जैसे कि सी, जैसे कि सी शार्प, जावा, गो, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ऐसे हजारों लैंग्वेजेस है, लिटरली हजारों लैंग्वेजेस है। ठीक है, इनफैक्ट कुछ कुछ कंपनीज तो इंटरनली खुद का लैंग्वेज बना लेते हैं ताकि उनके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कंसिस्टेंट रहे। लाइक Amazon uses a different version of जावा के ही ऊपर एक और उन्होंने रैपर लिखा है जो इंटरनली यूज करते हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंसेस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। फर्स्टली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ग्रामर होता है या फिर सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें आप गलती नहीं कर सकते। अगर उसमें आप गलती करते हो तो फिर आपको आंसर्स भी गलत मिलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रामर इधर उधर करते हो नेचुरल लैंग्वेजेस में, फिर भी समझ में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं जब बात कर रहा हूँ आपके साथ में, तब sometimes I may make mistakes in grammar. I may use a verb before. I may not use active voices correctly. I may not use passive voices correctly. Still, आपको समझ में आ जाएगा। That is because the way we are trained to communicate with each other. You still get to understand कि थोड़ी भी ambiguity बोलते हैं उसको। Ambiguity मतलब same thing but means differently in a different situation, or same sentence but has a multiple meanings. Okay, that ambiguity is okay for a natural language but it is not okay for a programming language. अगर आपको programming language में आपने एक बार एक sentence लिख दिया, right, now that sentence is nothing but an expression. अगर आपने एक expression या फिर instruction लिख दिया तो उस instruction का एक ही output आएगा. There will be no multiple or a different result of the expression that you write. बट नेचुरल लैंग्वेज में हो सकता है कि आप एक सेंटेंस लिखो, उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ठीक है, so these are the main differences between programming language and natural language. And when we start out learning the programming language, the very first mistakes that we make are usually syntax errors, मतलब grammar mistakes. For example, आप कोई वेरिएबल डिफाइन करना भूल जाते हो, या फिर आप नंबर ऑफ स्पेसेस गलत डालते हो, या फिर आप कोलन नहीं ठीक से डालते, या फिर आप राउंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ठीक से नहीं करते यूज। So these are some of the common mistakes that you make in the programming language. And if you are making those mistakes in the initial days, that is completely normal because everyone who is learning a new language is going to make that, especially the programming language. And the reason that you make those mistakes is because it's a strict language. It has a strict grammar. Okay. And we'll be learning through examples so that you'll understand more. और जब भी आप कोई मिस्टेक करते हो, स्पेशली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको वो मिस्टेक क्या हुआ है, स्पेशली सिंटैक्स मिस्टेक, एग्जैक्टली मिस्टेक क्या है और एरर क्या है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो कंपाइलर होता है या फिर जो पाइथन का
जो प्रोग्राम होता है पाइथन जो रन करता है, दैट विल कंपाइल द कोड दैट यू आर सेंडिंग इन फर्स्ट, और वो कंपाइल के बाद में जो भी एरर्स होते हैं वो आपको विजुअली दिखाएगा, सो दैट इट इज ह्यूमन रीडेबल। ऐसे नहीं बोलेगा कि देयर इज एन एरर इन योर कोड और आप ढूंढ लो कहाँ एरर है, वैसे नहीं होगा। इट विल एग्जैक्टली ट्राई टू पिन पॉइंट कि वेयर एग्जैक्टली इज द एरर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरर्स, एक्सेप्शंस एंड ऑल ऑफ दैट इन नेक्स्ट सेशंस, बट अभी के लिए बस इतना सोचो कि आप सिंटैक्स एरर करने वाले हो, और आपको सिंटैक्स एरर कैसे सॉल्व करते हैं उसके सॉल्यूशंस भी आपको आउटपुट में वहीं वहीं के वहीं दिखाया जाएगा कि आपको एरर क्या है आपके कोड में। सो विच इज अ गुड थिंग अबाउट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑलराइट। And most of the program language has that, especially Python. Python को जो error mechanism है जो आपको दिखाते हैं कि ये आपका error है, that pretty strong. वहाँ पे क्लियरली बताया जाता है कि क्या मिस्टेक है, कौन से लाइन पे मिस्टेक है, कौन से वर्ड पे मिस्टेक है, वहां तक वो पॉइंट कर सकता है द डिबगर। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? How many of you already have some experience in programming? Can I get a hand raise here? Okay, Shiv Prasad. What about others? Two people. Keep your hand raised. I would like to know exactly how many people are having the experience. You can just type in your name also. That is fine as well. I saw Yogita. I saw Shiv Prasad. What about others? Anyone from the course who is already having some experience or some exposure to coding, programming? We are going to assume that you don't have any experience, any background in coding, but I just want to know the number so that. Hello, sir. Yes, Akshay. Sir, I have started learning Java. You started learning Java. Okay, good. So you Yes. have some experience in coding. All right. Yeah. You have exposure to programming basically. What about others? All right. So Pramod says no experience. All right. I think it's fine. So we have few people who have some experience, who have background in programming, and we have Akshay who is learning Java. All right. So we have a few people who already have experience, but most of the people that we see here do not have any exposure to coding or programming. And that is what I said. We are going to assume you don't have any background in programming, and we'll be teaching you from the basics. Okay, differences between programming language and natural language. So can you think of any other differences? Anyone? The people who have some experience in programming, what other differences do you see in a programming language and a natural language? Akshay, since you said that you are learning Java, what's the difference between a programming language and a natural language? Except the ones which are listed here. Can you give us one more difference, or maybe a couple of more reasons, or couple of more differences? Hello, sir. Yes. We speak with human directly, but with computer, which program we type, it's directly not get connect to computer. It should be compiled. It should be decoded. Correct. So recorded. And what is that computer. process called? Compile. Right. So compiling, and you convert that compile into a machine learning program, or sorry, not machine understandable code. Program. Okay. Yeah, code. So one is the Java, then it is converted into a machine understanding code, and then it goes into the computer which is going to run it. I think there's someone who's raised the hand. Does not have syntax. It has syntax. करेक्ट, वी ऑलरेडी नो कि ग्रामर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर एडवर्ब्स होते हैं, अगर ऐड करने हो तो उसके बाद में आपके so there is syntax already in natural language, but the syntax is not strictly followed. जितना स्ट्रिक्टली हम लोग प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स फॉलो करना चाहते हैं, उतना स्ट्रिक्टली हम लोग सिंटैक्स नेचुरल लैंग्वेज का फॉलो नहीं करते, अनलेस अगर आपको कोई ऐसा
ऐसे लिखना है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे आपको मार्क्स वगैरह कट होने वाले हैं, स्पेशली इन स्कूल एंड ऑल वी सी दोस काइंड ऑफ टेस्ट्स, राइट? बट सिंटैक्स तो होता है उसमें भी, देयर इज अ सिंटैक्स, लेकिन वो सिंटैक्स उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट एल्स? बट गुड हरीश. सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है कोर्स में? एनीवन हैज एनी डाउट्स? Alright, so couple of other differences. Natural language में firstly there are various languages, just the way in program language there are various languages, और there are some commonalities. ठीक है, दोनों में commonalities भी होते हैं. For example, C और C++ में थोड़े से things common है, जो natural language में भी अगर आप हिंदी और मराठी में देखते हो कुछ चीजें common होती है, right? There are some similarities too, but the main difference is syntax is strict in programming language. Natural language syntax is not strict. This is from human to computer, and this is human to human. Right? Nowadays, you can also talk to your computer in a natural language. So we have heard of Siri, we have heard of Alexa. So all of these are able to understand the human instructions, but that does not mean that there's a human behind it. It's still a computer, but when you send an instruction to that particular computer software, it converts it into zeros and ones, and then tries to get a result for you. ठीक है, so it does not mean कि उसको आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, वो कन्वर्ट करता है in some understandable language. But whereas humans don't do that. If you speaks with someone in English, if that person is natively speaking in English, then he will directly understand in that language. उसको convert करने की जरूरत नहीं है किसी और language में. ठीक है. Alright, so I think that's it. That's enough for the programming language differences and natural language differences. Let's move on. Alright, so now that we know that प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्राम होता क्या है? लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब मैं बार बार बोलता हूँ प्रोग्राम है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, there's a program which is trying to understand something, there's a program that is trying to execute something, there's a program that is handling things, right? When I say all of this, I use the term program as if you are the users who know exactly what a program means, okay? But since some of the people are not from the programming background, let me just give you a formal definition of program होता क्या है. सबसे पहले, it is basically a set of instructions. एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को चाय कैसे बनती है वो बताना होगा, ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शंस बताओगे, राइट? एक रेसिपी लिखी जाएगी और जब वो रेसिपी को फॉलो किया जाएगा तब चाय तैयार हो जाएगी. सेम वे प्रोग्राम में भी ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं. सबसे पहले ये करो, उसके बाद में डू समथिंग एल्स, देन मे बी यूज समथिंग एल्स, मे बी रीड अ फाइल, देन मे बी get something from the internet, do a arithmetic operation, plus minus, subtraction, multiplications, जो कुछ arithmetic operations है, right? So everything is in a set of instructions. ऊपर से नीचे तक instructions होते हैं, वो instructions एक run होते जाएगा. Same way, if you're making a tea, you will be having a recipe, you will be following the recipe to make a tea. Same thing program does, or the computer does, is once you give it a set of instructions, it will read from top to bottom and try to execute those instructions. All right, so we write the instructions and computer will execute those instructions. Every programming language is also going to have 5 main things: input, output. There is something called as math, which is an arithmetic operation.
कंडीशनल एग्जीक्यूशन, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, रिपीटेशन, एक ही चीज को रिपीट करो, लूप में करो. अगर हम यही एग्जांपल लेते हैं टू मेक अ टी, then input is nothing but your ingredients. What are ingredients to make a tea? Milk, water, tea powder, all of that, sugar and all, right? Same way, input is keyboard, file, databases. So all of these are different kind of inputs for a program. Output is something that you see on a screen, something that you save into a file, something that you send over a network. Output of this recipe is just a tea. Math is like, अगर आपको कुछ एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, फ्लोर डिवीजन करना है, then that is what the math part, arithmetic part of a programming language. If you want to tie it back to the recipe of making tea, then it's like adding tea, adding milk, mixing things, all of that. ठीक है. कंडीशनल एग्जीक्यूशन, हम लोग बोलते हैं कि कंडीशनल एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जांपल जब आप सीरी से बात करते हो या फिर जब आप एलेक्सा से बात करते हो, यू हैव टू सेंड अ वर्ड फर्स्ट विच इज हे एलेक्सा और हे सीरी. जब तक वो पहला वर्ड ये सुनता नहीं है, हे एलेक्सा फिर हे सीरी, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, right? So that's the if condition. That's the if condition that is present in the Alexa code or the Alexa program, which is unless and until you say hey Alexa or Alexa, it is not going to activate itself to receive the instructions. Same way, it is the if statement. If someone is saying Alexa near this device, and if that microphone hears Alexa term or a word, that is when it gets activated, and next you are going to give more instructions to it. Same thing, कोड में भी you'll have many if else statements. अगर ये हुआ तो क्या करना है, अगर वो हुआ तो क्या करना है. सेम वे, जब आप रेसिपी में, जब आप टी बनाते हो, तो रेसिपी में अगर पानी बॉईल हो गया तब क्या करना है. ठीक है, तब मे बी यूल स्टार्ट एडिंग मिल्क इनटू इट, राइट. रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब एक ही चीज को जब बार बार करते हैं, तो इनफैक्ट कंप्यूटर्स आर वेरी गुड एट रिपीटेशन. एक ही इंस्ट्रक्शन अगर उसको बार बार भी देते हो आप, फिर भी it will be able to execute it with the same efficiency. उसका efficiency कम नहीं होगा, and with the same effect भी कम नहीं होगा. एग्जाम्पल जब हम लोग ले रहे हैं रेसिपी का, तब जैसे कि स्टर करना या फिर एक और कप का चाय बनाना, so all of that is repetition. तो ये सब कुछ प्रोग्राम में आपको दिखेगा. जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तब ये ज्यादा क्लियर होगा, बट अभी बस इतना याद रखो कि it is not very different from making a recipe or making creating something. इसलिए when I was trying to explain you this, what are these different reasons, this is what is one of the main reasons for me, because it gives me an opportunity to build something or create something, give instructions, and then the computer is going to follow it to create something. All right, that something could be a program as complex as ChatGPT, or a program which is as simple as a calculator. Now these are some things which a non-computer background person can understand. But if you're from a computer background, then formally program is made of only three things. एक होता है सीक्वेंस, दूसरा होता है सिलेक्शन, तीसरा होता है इटरेशन. फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, इट कुड बी जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, सीक्वल, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज. देयर इज नो लैंग्वेज इन द वर्ल्ड which is more than these three structures. Okay, there's no language. ये तीन स्ट्रक्चर्स होते ही है आपके प्रोग्राम में, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. पहला है सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन. देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ दिस. इसके अलावा कुछ और है ही नहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. सीक्वेंस का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं इन सीक्वेंस. ऑलराइट. सिलेक्शन का मतलब होता है आपका इफ स्टेटमेंट, कंडीशंस. अगर ये हुआ तो क्या करना, अगर वो हुआ तो क्या करना, राइट. डिफरेंट कंडीशंस. थर्ड इज इटरेशन, लूपिंग रिकर्सिवली, एक ही चीज को फिर बार बार करना.
ये 3 चीजें आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे, और ये 3 चीजें जब तक होती हैं तब तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती भी नहीं है या फिर कंप्लीट भी नहीं होती, ठीक है। सो formally you'll have these 3 things in every programming language: sequence, selection and iteration. You don't have to remember this. अगर आपको याद रहता है तो गुड, अगर नहीं रहता है तो इट्स फाइन। यू डोंट, ये पूछते नहीं है यूजुअली इंटरव्यू में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, थिंग्स लाइक दैट, बट just for completion of understanding what a program is, these are the 3 things which are building blocks of any program or any programming language. Any questions here? Anyone wants to give an example of a program that they use daily? Browser is a program, correct? Any app that you see on your phone is a program. It's actually a set of programs, but it can be wrapped up into a single program. Just type in your examples. I think it's too simple a question, so that let's not waste your time there. बहुत easy है. Everything that you see around on your computer, everything that you see around on your phone, it's basically a program. All right. So before we go and learn about some pros and cons of Python, I would like to introduce how are you going to use Python in this particular course, at least to start out with. ठीक है, जब आप शुरू करते हो तब आपको प्रोग्रामिंग में तब आपको पाइथन कैसे यूज करना है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। लेट मी लॉग आउट फ्रॉम हियर फर्स्ट। This is a very popular website which we are going to use throughout our course. It's popular in data science, and we are going to learn Python and data science both through this particular website. All right. I'm not going to tell you to go and do some courses here, but I'm just going to tell you how we are going to use it. So as soon as you go on this link, it will open you this particular page where you'll have some options: sign in, register with Google, or register with email. Right. So let's say register with Google. This is what you do. You click on here if you have a Google account. I'm already logged in. That's why. अब मुझे यहाँ पे लेके आ रहा है. Let me open a different browser here. Okay, ये नहीं चाहिए मुझे. I want to open this in a private window. Kaggle.com. Alright. यहाँ पर मैं रजिस्टर विद गूगल करना है आपको, और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालना है. You just have to sign in into Google. This recording will be shared, so no need to worry. Let me just log in here. So this is the authentication I have on Google. Maybe you don't have this authentication, but depending on what type of authentication you use for your Google accounts, आपको Google से login करना है. जब आप login करते हो तो it will take you to this kaggle.com. यहाँ पर आपका प्रोफाइल होता है. This is your profile. Alright. This is my profile. और इस प्रोफाइल में आपको कुछ टैब्स दिखेंगे: होम, कॉम्पिटिशन्स, डेटा सेट्स, कोड, डिस्कशन, ये सब कुछ. कोड पे जाना है आपको, और यहाँ पर अभी आपका ये लिस्ट एम्प्टी रहेगा अगर आप कैगल यूज नहीं करते हो अभी तक तो, लेकिन आपको इसमें ऐड करना शुरू करना पड़ेगा. ओके. जस्ट एक और बात जो कैगल की अच्छी है, यू विल हैव अ वेरियस डेटा सेट्स. अगर आप कोई भी एक डेटा सेट ढूंढ रहे हो और अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है इजीली, कैगल पे मिल जाते हैं. बहुत सारे डेटा सेट्स हैं. अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है मे बी कार्स के ऊपर,
अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है कंप्यूटर विजन के ऊपर, अगर आपको कोई प्रोग्राम करना है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर डेटा सेट्स में. बट नो नीड टू गेट afraid of this particular websites. It's just a way for us to learn the Python as soon as possible and learn the data science too. So this is the way how you log in. और यहाँ पर this is the lesson number 1 that I have created for you all. Let me just copy this lesson. If you join the course, I can share all of this in our Discord channel, but I'm not sure if you all are there yet. I'll just share this here. So copy paste करके रखो आपके पास में so that you can access it later. All right. So I'll just show you what exactly that is. So this is lesson number 1, and it has some code here जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है इंस्ट्रक्शंस में, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ kaggle.com का अकाउंट. आपको kaggle.com का अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको यूजर नेम मुझे सेंड करना है. ऑलराइट, बट फर्स्ट थिंग इज जस्ट ओपन अकाउंट इन kaggle.com, एंड वंस यू ओपन अकाउंट, ये जो लिंक यहाँ पर शेयर की गई है, वो लिंक उसको ओपन करना है आपको. ये लिंक मैं फिर से हाईलाइट करके रखता हूँ, अगर आप रिकॉर्डिंग फिर से रिविजिट करोगे तब ये लिंक यहाँ पर रहेगी आपके पास, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सेस इट. तो थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, उसके बाद में विल गो बैक टू द स्लाइड्स. तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन पाइथन इज हाउ टू डू सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस. आप सबको कैलकुलेटर पता है, द सेम कैलकुलेटर की कैपेबिलिटी जो आपको मिलते हैं कैलकुलेटर पे, वो आपको पाइथन के कंसोल में भी मिलते हैं. तो हम लोग पाइथन को एज अ कैलकुलेटर यूज करेंगे. यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, स्टार ऑपरेटर, जैसे मल्टीप्लिकेशन. दिस इज फॉर डिवीजन. डिवीजन के लिए स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश. आपको क्वेश्चन मार्क के नीचे दिखेगा वो आपके लैपटॉप पे. ये परसेंटेज का साइन है, बट दिस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलस ऑपरेटर. ओके, दिस कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑपरेटर. ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है. सो फॉर एग्जांपल, जब उसको 7 मॉड्यूलस 3 करते हो तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1. दैट इज व्हाट इट करेक्ट. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू रिटर्न. एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है टू द पावर ऑफ. 25 का स्क्वायर करना है तो 25 स्टार स्टार 2. तो दिस इज यूज फॉर एक्सपोनेंशिएशन, या फिर टू द पावर ऑफ. तो 25 का स्क्वायर, दिस विल गिव द आंसर. Floor division is something new that you may have not seen in your calculator. Floor division का मतलब होता है division but without the decimal points. 7 divided by 2 कितना होता है? 3.5. जब आप floor division करते हो तो आपको 3 मिलता है आंसर बैक. Okay, so that is called as floor division. You remove the decimal points and you return the answer without decimals. That is called as floor division. It is used pretty commonly in some of the places. जब भी वो यूज होगा तब हम देखेंगे. ठीक है, बट दीज आर द मेन ऑपरेटर्स. इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पाइथन में दिखेंगे नहीं कोई और. ठीक है, दीज आर द ऑल ऑपरेटर्स दैट यू नीड, अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट यू आर गोइंग टू डू. यहाँ पे नंबर्स ही है, ऑल्दो आई एम राइटिंग इंटीजर्स. यहाँ पर डेसिमल्स भी यूज कर सकते हो आप. ठीक है, जैसे 22.5, 22.9, ये सब कुछ यूज कर सकते हो. डेसिमल्स भी यूज कर सकते हो. और आप सबने मैथ्स में पढ़ा होगा बॉडमास रूल के बारे में, विच विल टेल यू कि पहला कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है. राइट, तो सेम यहाँ पर भी पाइथन में भी यूज होता है. पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो चीज होता है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर रेस टू द पावर का एग्जीक्यूट होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सबट्रैक्शन होगा. ओके, सो बॉडमास रूल इज यूज्ड इन पाइथन एज वेल. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको. यहाँ पे नीचे आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है. ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, इस आइकॉन पे, तो ये कंसोल ओपन करता है, और इसको कंसोल भी बोलते हैं या फिर इंटरप्रेटर भी बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर पाइथन कंसोल.
यहाँ पर मैं कुछ चीजें अभी टाइप जब करूंगा उसका आंसर मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2, इसको जब मैं एंटर करता हूँ तो आंसर मिल गया मुझे 3। ओके, so this is the Python console I'm using to get the answers. Let's try 2.4 plus 4.9, right? तो 7.3000001। सो ये जो आपको पॉइंट के बाद में इतने ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट्स का हम लोग पढ़ेंगे तब विल गेट इनटू मोर डिटेल्स ऑफ दैट, बट फॉर नाउ द एक्चुअल आंसर इज 7.3, but ये additional numbers you'll see usually in floating points. Decimal numbers में you'll see something extra like this in Python, ठीक है। Let's do this 1 + 2 का square, or maybe square of this, right? So this is पहले ब्रैकेट में होगा, उसके बाद में स्क्वायर होगा उसका, ठीक है। So this is 9. So this is how we use Python as a calculator, या फिर Python console as a calculator. Okay, now this is very simple use of Python, right? So Python can do much more than just do this operations, but हम लोग यहाँ से start करेंगे. We have to start somewhere, right? So that's why we are starting from operations, arithmetic operations. So आपको क्या करना है, Kaggle का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। Kaggle का अकाउंट ओपन करना है, और ये जो लिंक मैंने ओपन शेयर किया आपके साथ में, कहाँ गई वो लिंक, जो लिंक मैंने शेयर की है उस लिंक पे जाके आपको उसको एडिट करना है। I'm not sure if you have the access to edit it. Let me just try this once. Alright, so देखो यहाँ पे साइन इन करके नहीं है, राइट। सो जब ये ओपन करोगे you'll see two options here, sign in, register, and third option is copy and edit. Okay, you have to click on copy and edit ऐसे, उसके बाद में ओपन दिस वन, नॉट श्योर, जब तक आप रन नहीं साइन इन नहीं करते तब तक वो रन करने नहीं देगा आपको, बट जस्ट क्लिक ऑन कॉपी एंड एडिट, क्लिक ऑन द टर्मिनल हियर एंड ट्राई आउट फ्यू थिंग्स। ये जो चीजें यहाँ पर लिखी है ट्राई करने के लिए, 1 + 2, 2 + 4, 4.93, ये सब सारी चीजें थोड़ा सा टाइप करके देखो। 4/3 ट्राई करते हैं, दिस फ्लोर, स्टार्टिंग द सेशन, टेक सम टाइम। By the way, this is called as a Jupyter notebook, alright? इसलिए यहाँ पे notebook लिखा हुआ है, this is called as Jupyter notebook. हम लोग सीखेंगे Jupyter notebook वगैरह क्या होता है, nothing to worry. There's something is still saying that it is starting. Let's wait for it to complete. It started. Okay, it's working now. So 4 divided by 3. So your answer is 1, because 4/3 is कितना, 1.3. This is a floor division. Floor division में सिर्फ 1 is what you get back. ये decimal की values drop हो जाते हैं. Alright. So that is how you do arithmetic operation in Python, and we have to try a few arithmetic operations today itself. ठीक है, रुकना नहीं है, 2 दिन के बाद में देखेंगे, ऐसे कुछ नहीं करना। आज के आज Kaggle के अकाउंट ओपन करो और उसको कॉपी एंड एडिट करो, ठीक है। आपको लिंक आ जाएगा रिकॉर्डिंग का इसके ऊपर on your Telegram, ठीक है। One more thing that I wanted to share is the link to this particular channel. So if you have taken the admission, you can click on this link and enter the Discord channel. Okay, just let me know that you have taken the admission, and I'll give you access to everything. So as soon as you log in or you come inside, you will be not able to see any of this. आपको सिर्फ ये 2 चैनल दिखेंगे, जनरल और सिस्टम messages. But just send me a message कि you have taken the admission. I'll give you access to other channels here. All right. So ये भी लिंक आप शेयर करके रखो, मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आप कॉपी करके रखो ये सारी चीजें, ठीक है। If you don't have a way to copy this, जब recording आएगा then you have to see and then type it. So it's better you just keep a copy of this. All right.
So that was about the arithmetic operations. Arithmetic operations में किसी को कोई doubts? It is very simple. पाइथन को एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं वो दिखाया गया है यहाँ पर. पाइथन में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो दिखाया गया है यहाँ पर. ठीक है, किसी को कोई सवाल इसके ऊपर? एवरीथिंग अंडरस्टूड? यस, नो, फीडबैक? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस Yes, क्लियर है sir. सबको? Yes. गुड. ठीक है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, कॉपी, एडिट एंड यूज, एंड ये सारी चीजें रन करके देखो. नेक्स्ट is something called as variables, which is very important in any programming language. अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा. ठीक है, तो इमेजिन करो, सॉरी नॉट इमेजिन, जस्ट सी दिस इक्वेशन. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल और फॉर्मूला ऑफ अ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. आपने स्कूल में पढ़ा है इसके बारे में. ठीक है, ये एक इक्वेशन है. दिस इज अनदर इक्वेशन जो लाइन का इक्वेशन है. दिस इज एक्चुअली नॉट अ लाइन इक्वेशन, दिस इज जस्ट अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन. लाइन की इक्वेशन में यू नीड x एंड y बोथ. यहाँ पर सिर्फ x है, तो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट. ऑलराइट, तो ये इक्वेशन देखते हैं हम. सर्कमफरेंस का इक्वेशन सबसे पहले हमने स्कूल में पढ़ा है ये इक्वेशन. ठीक है, सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई r. यहाँ पर 2 कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कुछ और रहेगी नहीं, सिर्फ फिक्स्ड है. ये 2 इज फिक्स्ड. पाई की वैल्यू भी फिक्स्ड है 3.14. एक वैल्यू जो फिक्स नहीं है दैट इज r, which is called as a variable. This is a variable. ये r की वैल्यू क्या रहेगी उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू क्या होने वाली है. यस और नो? राइट, अगर r की वैल्यू चेंज होती है तो ये वैल्यू भी चेंज होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई दीज आर वेरिएबल. दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ वेरिएबल. This variable and this variable are both dependent. So this is dependent on your r. r की वैल्यू जब चेंज होगी तब c की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी. एक और इक्वेशन है यहाँ पर 3x minus 4 is equal to 11. ठीक है, इन मैथ दिस इज फाइन, दिस सेकेंड इक्वेशन इज फाइन. लेकिन पाइथन में लेफ्ट साइड में हमेशा एक ही वेरिएबल रहेगा, जैसे कि ये. ओके, ऑलवेज इन पाइथन यू ओनली हैव वन वेरिएबल इन द लेफ्ट साइड. राइट साइड में you'll have some expression calculation, लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा एक ही रहेगा. दिस इज अ इनवैलिड इक्वेशन और इनवैलिड एक्सप्रेशन फॉर पाइथन. वेरिएबल्स जैसे यहाँ पर r लिखा है. ठीक है, अगर मैं c इज इक्वल टू 2 पाई r लिखता हूँ तो सबसे पहले बिकॉज दिस साइड इज गेटिंग calculated first or this side is getting executed first, it is trying to see what is the value of r. जब तक पाइथन को r है क्या ये पता नहीं चलता तब तक it is not going to calculate this value, तब तक ये इसको रन भी नहीं करेगा. I'll show you an example what I mean by that. So maybe not here. So let me just see. So let's say I say c is equal to 2 into पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 into r. ठीक है, जैसे मैंने वो टाइप किया इसने एरर दे दिया मुझे. कि एरर क्या है वो देखते हैं. r इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये r जो आपने लिखा है यहाँ पे c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, ये r का मतलब पाइथन को अभी तक नहीं पता. तो आपको सबसे पहले r बताना पड़ेगा. यू हैव टू टेल r इज इक्वल टू लेट्स से 21 which is the radius of my circle. Okay, अभी when I do this c is equal to 2 into 3.14 into r. Now this will work. So value of c is 136. Okay, तो ये c की वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है. लेकिन ये फॉर्मूला जो r है दैट इज ऑल्सो एन वेरिएबल. सो आई हैव टू नो दैट वेरिएबल फर्स्ट बिफोर आई यूज इट. थोड़ी देर पहले क्या किया मैंने, जब मैंने ये इक्वेशन लिखा तब ये r की वैल्यू पता नहीं थी पाइथन को, तो इट वाज अ वेरिएबल. इसलिए इट सेड कि r इज अननोन, ये इसके बारे में कुछ पता ही नहीं अभी तक. तो पहले मैंने क्या किया, फिर ये एरर आती ही सबसे पहले मैंने r को डिफाइन किया, r इज इक्वल टू 21. उसके बाद में मैंने r को यूज किया. सेम थिंग फॉलो करोगे आप हमेशा. इफ यू वांट टू यूज अ वेरिएबल इट हैज टू बी फर्स्ट defined here like this. Okay, you have to tell what exactly is that variable.
उसके बाद में यू कैन यूज दैट इन इक्वेशन लाइक दिस. ओके, ये इक्वल टू भी लिखने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू जस्ट गेट द आंसर लाइक दिस, आई कैन स्टिल डू इट. 2 into 3.14 into r. This will also work. It will give me an answer. Okay, ये गलत है, यहाँ पे 3.24 लिखा मैंने, 3.14 लिखना चाहिए था. That's fine. Alright. तो जब भी कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, so this is the equation that we are trying to resolve. ठीक है, this is a variable, this is a equal operator, and this right side is what the value is going to be assigned to this variable. अगर मैं इसको सिंपल में देखूं, जब ये r डिफाइन नहीं था तो मैं r को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, r इज इक्वल टू 21. तो r को 21 की वैल्यू असाइन कर दो. उसके बाद में यहाँ पर 21 है, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तब ये r को रिप्लेस हो जाएगा 21 से. So this will get executed and that will get assigned to C. So it is right to left always. Right to left. 21 assigned to R. R की वैल्यू रिप्लेस होगी 21 से. This multiplication is getting assigned to C. So C की वैल्यू ये आ गई. Okay. So that is how you define a variable in Python. This is how you define a variable in Python. Not just in Python, in most of the programming language, this is how you define a variable. Variable मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है कभी भी. ओके, तो ये आपका इक्वेशन है सर्कल का, सर्कमफरेंस का. दिस इज द वेरिएबल आर. ओके, तो यहाँ पर भी वही लिखा है. इसको क्लोज कर देता हूँ मैं कंसोल को. अभी यहाँ पर कुछ चीजें बोली गई है ट्राई करने के लिए. पहला है कि क्रिएट ए वेरिएबल एक्स, असाइन 40 टू एक्स. लेट्स डू दैट. तो यहाँ पर क्या बोला है मैंने, यूजुअली आपको जब शुरुआत में कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, इट विल बी वेरी क्लियर द वे इट इज रिटन हियर. ठीक है, तो x को वैल्यू 40 असाइन करनी है. दैट इज डन. नेक्स्ट, यूज द फॉर्मूला सर्कमफरेंस टू कैलकुलेट द सर्कमफरेंस वेयर x इज द रेडियस. अगर x रेडियस है तो 2 into 3.14 into r. सॉरी, नॉट r, x. दिस इज द सर्कमफरेंस. अगर x instead of being a circle, it is instead of being a radius, it is side of a square, then एरिया निकालना है आपको. यहाँ पर x को आपको साइड स्क्वायर का साइड समझ के एरिया निकालना है. तो हाउ डू यू डू दैट, x का स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose side is 40. ऑलराइट, सो ये करना है आपको शुरुआत में. आज में करो. इट्स अ गुड थिंग इफ यू डू इट एज सून एज पॉसिबल, बट मेक श्योर यू डू इट बिफोर द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, आई जस्ट, ये रिकॉर्डिंग जब आपके पास रहेगा तब यू डोंट हैव टू बी लॉस्ट की यार कैगल में चले गए, अभी क्या करना है नेक्स्ट. रेफर करो रिकॉर्डिंग को, आपको मिल जाएगा सब कुछ. लेट मी जस्ट डिलीट दिस. मैंने साइन इन भी नहीं किया बाय द वे, बट आप साइन इन कर लो बिकॉज यू हैव टू सेंड मी द यूजर नेम. जो डिस्कॉर्ड चैनल पे ज्वाइन करोगे, सेंड मी द यूजर नेम. हाउ डू यू डू दैट? So for example, let me just here. I saw Harish has already joined here, right? So I just click on Harish here like this. I can send him a message like this. Hi. Now Harish can reply me here. He does not send or something. Okay, I'm not even. I have to just verify here sometimes. Animals. Okay. Alright, so just लॉग इन करो कैगल में और आपका जो यूजर नेम रहेगा वो मुझे भेजो. यूजर नेम आपको यहाँ मिलेगा कैगल का आपका. Go here, this is your profile, and this is your username. Okay. I think this is the username, right one. Public profile. This is the username, right? तो ये यूजरनेम है, आपको यूजरनेम भेजना है मुझे. Let me do one thing, क्योंकि some people are already there on that Kaggle thing. यहाँ पर जो चीजें मैंने शेयर की, let me just share this on the Kaggle too. So that आपको जनरल में शेयर करता हूँ. Later on we will
पुश इट टू, बाद में आपको ये सब ये लिमिटेड है अभी एक्सेस इनको, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस है. वंस यू लेट मी नो दैट आपका उनका एडमिशन हो गया, आई विल ओपन दिस एक्सेस टू यू ऑल. गो बैक हियर. तो वो करना है आपको, कैगल का अकाउंट ओपन करना है और ये लेसन नंबर 1 रन करके देखना है एक बार, ठीक है. There's nothing too complex in this, very simple. बस ओपन करना, रन करना, that's it. Now let's go to the next one. ठीक है, let's try to see, let's try to come back to the slides. ठीक है, तो पाइथन के प्रोज एंड कॉन्स हम लोग थोड़े से देखते हैं. फर्स्टली let's go to the pros. It's beginner friendly. I think we already talked a lot about this topic. हमने बहुत बार डिस्कस किया ये टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, why is it beginner friendly. जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस इतना सिंपल है, वेरिएबल्स क्रिएट करना इतना सिंपल है, वेरिएबल्स के इक्वेशंस क्रिएट करना इतना सिंपल है. सो इट्स ऑल नेचुरल द वे यू इज द वे यू कैन कोड, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर थिंकिंग कि मुझे ये करना है, तो और इंस्ट्रक्शंस भी वैसे ही देने होते हैं. बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसके बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, अगर कोई इशू आता है, कोई बग आता है, तो फिर वो जल्दी फिक्स हो जाते हैं. स्केलेबल का मतलब होता है अगर कोई प्रोग्राम आप लिखते हो 10 यूजर के लिए, और अगर कल आपको वो प्रोग्राम ओपन करना है 10,000 यूजर के लिए, फिर मे बी 1 लाख यूजर्स के लिए, यू कैन स्टिल स्केल दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे आपको स्पीड में. अगर स्पीड आपका प्रोग्राम का बहुत स्लो होगा तो आपको स्पीड वगैरह फास्ट करना होगा, बट इट इज डूएबल. दैट इज व्हाट दिस हाईली स्केलेबल मीन्स. ओके, नेक्स्ट, पोर्टेबल. अगर आप विंडोज मशीन पे रन कर रहे हो, यू कैन पोर्ट दैट कोड टू अ मैक मशीन, ओके, और यू कैन पोर्ट दैट कोड टू अ लिनक्स मशीन और यूनिक्स मशीन. फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल. फ्लेक्सिबल मतलब it can be work with it can be changed so that it can work with other infrastructures. You can put it in cloud, you can make it also work with tableau में भी आपको python के scripts लिख सकते हो कुछ कुछ जगह पे. It gives you an option to have an integration with the programming language. In tableau it is python or r. एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, एटलीस्ट 150,000 लाइब्रेरीज है पाइथन में, और उसमें से बहुत सारी लाइब्रेरीज एक्टिवली डेवलप होती है. साइकिट लर्न, pandas, numpy, this words might feel new to you, but जल्दी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स. तो ये लाइब्रेरीज का मतलब यही होता है कि कुछ फंक्शंस पहले से डिफाइन किए हुए थे और वो फंक्शंस आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है उस लाइब्रेरी की वजह से. ऑलराइट, जैसे कि इमेजिन करो एक ह्यूमन लाइब्रेरी है, राइट. ह्यूमन लाइब्रेरी में क्या होते हैं, बुक्स होते हैं. पाइथन लाइब्रेरी में क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं. तो यू रीड अ बुक, यू गेन समथिंग. यू रीड अ पैकेज, you import a package, you use the functions that are present in that package. Same concepts. There's lot of internet of things opportunities. मतलब जो आपके devices होते हैं आपके फोन में, Alexa devices या फिर even sensors जो भी आजकल यूज होते हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में, या फिर घर में भी कई जगह पे आप लोग सेंसर्स आजकल डालते हैं, उनके साथ भी इंटीग्रेशन हो सकता है. और in that sense python is basically a general purpose language. जो भी आपको अचीव करना होता है, especially which needs some kind of a software, वो आप python से अचीव कर सकते हो. every part of a software has an extension of python. I mean has a way to do it in python. Now because it is so general language, all right, because it is made so much beginner friendly, it also has some issues. Okay, because it is made so much flexible, it also has some issues क्या है, थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू सी. जो आप सी में कोड लिखते हो, पाइथन का जो अंडरलाइंग लाइब्रेरीज है वो सारे सी में लिखी गई है, ठीक है. numpy is written in C and all, ठीक है. तो बट इन जनरल इट इज स्लोअर देन सी. अगर आपको एडिशन करना है तो एडिशन पाइथन में करोगे या फिर सी में करोगे तो थोड़ा सा स्लो रहेगा. ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट क्योंकि एडिशन इज अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन, बट देयर आर सम ऑपरेशंस व्हिच टेक्स टाइम और उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन करना होता है कोड का. सो पाइथन इज अ लिटिल स्लो इन दैट.
I'm saying little because development is still going on. आज भी लोग काम कर रहे हैं to make it faster. High memory consumption, मतलब जो आपका RAM होता है थोड़ा ज़्यादा यूज होता है when you try to do things in Python as compared to things that you do in C. I'm giving example of C a lot of times because C is one of the languages which is very fast, especially जब आप कोई भी रियल टाइम कोड लिखना चाहते हो इट इज यूजुअली रिटन इन सी ताकि लेटेंसी ना आए। लेटेंसी मतलब लैग ना आए। आप जब एग्जीक्यूट करते हो तभी उसका एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो रुका हुआ है, उसको मेमोरी नहीं मिल रही है या फिर वो रुका हुआ है किसी और चीज के लिए, ये सब और वो चीज ही कंप्लीट नहीं हो रही है। so it's not like that. So Python is little bit slow in that sense, but C is usually used in real time situations most of the time. Python is also used, but in not so real time. For example, you must have heard of high frequency trading. I'm not sure how many of you really understand that term. High frequency trading मतलब बहुत सारे जो ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं या फिर करेंसी मार्केट में जो शेयर करते हैं ट्रेड करते हैं, उनको मिली सेकेंड्स में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने होते हैं। इमेजिन करो मिली थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, which is not easy to do. Okay, and those kind of situations are called as high frequency trading or high frequency programs. उसमें C use होता है. Yes, let's not get into weeds of that. Next is garbage collection नाम का एक मॉड्यूल होता है which basically will collect जो वेरिएबल्स आपकी यूज नहीं हो रहे उनको कलेक्ट करके मेमोरी ओपन अप करना, फ्री करना। वो थोड़ा सा इट हैज सम इश्यूज बट लाइक आई सेड if you're using Python, you basically will not be able to see these issues because, in fact, I being a advanced developer or advanced user of Python, I have never faced these issues. Especially garbage collection के issue मुझे कभी नहीं आया। मल्टी थ्रेडिंग का थोड़ा सा इशू आता है बट यू कैन वर्क अराउंड दिस। स्लोनेस you can optimize it. Memory consumption, again you can optimize this, things like that. Okay? You have to be an advanced user to start working on this concept, but to start out with you'll not be facing these issues. All right, I think someone had unmuted themselves. You want to add anything? Any questions, anyone? All right, so we are getting to the end of this today's session. Before we wrap up, let's just see a few companies where the Python is used. So you name any tech company, any non-tech company, any company that you have ever heard of, it is using Python these days. Okay, starting from Netflix, Facebook, Google's, until even the smallest of the companies are all using Python. Okay, some version of Python. So it's so basically ये जो companies के नाम है, it is not just limited to these are just some big companies. Okay, but apart from this there are millions of companies. I'm not even saying thousands or there are millions of companies which are using Python. Okay, so I think that is one of the reasons why uh, Python is a must-have skill in these days, because all the companies, even if you're not going to code, even if you're going to be a tester, even if you're going to be someone who is not going to see the code actively every day, they're expecting you to know coding. And if you're going to know coding, then why not just learn Python? All right. So I think the first program that we're going to do is the one I shared, which is Notebook, the way I showed it to you. What is this? Yeah. Session थोड़ा सा you have to be active on that link, नहीं तो थोड़ा सा कभी कभी log out कर देता है आपको. Let me just sign it in. Again, just to revise, आपको ये लिंक पे जाना है Kaggle के, ये एडिट कॉपी एंड एडिट का ऑप्शन आएगा, आपको कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करना है।
थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी लोड होने के लिए। सेशन स्टार्टेड जब लिख के आएगा तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कंसोल ओपन होगा, स्क्रॉल डाउन करना है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो यहाँ पर लिखे हैं सारे ट्राई करके देखने हैं। 1+2, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस ट्राई करके देखने। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये ट्राई करके देखने हैं। वेरिएबल क्रिएट करना है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, सरकमफेरेंस और इक्वेशन स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, इतना करो until Tuesday, and Tuesday we'll learn more. So we are going to learn data science on Tuesday, but we'll also try to touch a little bit of Python. ठीक है, Python की प्रैक्टिस हम लोग थोड़ी रोज करने की कोशिश करेंगे ताकि नेक्स्ट मंथ और सो you will be at a good position in Python. All right. Let me just stop here. Let me take a couple of seconds to address any questions that you guys might have, any doubts that you might still have about the course, or anything that you would like to bring to my notice. Let me go and stop the recording first.